गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, हाउ यू ऑल आर? फाइन। चलो, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लैंड फॉर्म्स। मूवमेंट्स टेक प्लेस इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ ओवर द टाइम। मूवमेंट्स मेक एंड चेंज द लैंड फॉर्म्स. We find such type of experiences through the incidents like shocks of earthquakes, volcano or tsunami, etc. These movements somewhere creates mountains, plateaus and fold valleys. In addition to this, erosion and deposition occur due to the natural force like river, glacier, wind, sea waves are which create alluvial plains, valley and gorges. When a particular part of land surface take certain height, slope and shape is called a landform. Underline कर लेना. Main type of landforms. Landforms are recognized by various names like mountain, plateau, plain, etc. according to the height of the region. लैंड फॉर्म का मतलब क्या कि लैंड जो ज़मीन है वो किस फॉर्म में होती है। देखो, जैसे कि आप डायग्राम में देख लो, मेन टाइप ऑफ 11.1 में देखो तो देखो जैसे कि है ना, माउंटेन्स है, पहाड़ भी है, फिर प्लेट्यू मतलब चोटी भी है, प्लेन्स मतलब कि कहीं पर बिल्कुल प्लेन भी है, फिर आइलैंड भी है, फिर सी लेवल्स भी है। ठीक है, अभी हम उसमें माउंटेन पढ़ेंगे। द एरिया हैविंग मोर देन 900 meters height above the sea level with a gentle or abrupt slope is called mountain. Mountains are formed in the crust of earth due to action, reaction and interaction of natural and physical force like earthquake and volcanoes, impact of more than one multiple action and force are seen in the origination and development of the mountain. That is why, in the context of their various aspects, mountain are different from each other. Classification of mountain. Mountains are divided into four divisions on the basis of process of formation: fold mountain, block mountains, volcanic mountains, residual mountains. Fold mountain most of collectively deposited sediments mount at the bottom of sea or lakes create folds due to the pressure which comes from both the sides. Its upper part turn as peak and lower part turn as valley form can be seen. जैसे कि देखो, ये 11.2 में देखो, जो समुद्र से जो लहरें टकराती है ना, तो ऊपर नीचे जो होती है, तो वहाँ से जो पानी टकरा करके जब अपने साथ जो कंकड़ पत्थर और वो जो लेकर आते हैं, तो उससे जो चट्टान बन जाती है ना, उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन. हिमालयाज इन एशिया, अल्प्स इन यूरोप, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका एंड Andes in South America are the main fold mountains of the world. अब है ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है कि ड्यू टू द जियोलॉजिकल forces pulling force is applied on the surface of the earth, then crack are the formed as a result. Surrounding areas in submerged and central part remains stable, forming block mountain. The gorges are formed in the lower area. Horst Mountain of Germany is the best example of it. Therefore, such mountains are also called Horst Mountains. Nilgiri, Satpura, विंध्याचल माउंटेन ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है, जैसे ऐसे पानी बह रहा होता है और उनके बीच में जो है टापू जैसे बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स. वॉल्केनिक माउंटेन, ये तो आपको बहुत ईजी तरीके से पता है. लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि जहाँ से ज्वालामुखी फटता है और वहाँ पे जो कंकड़ पत्थर ज्वालामुखी जो इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे जो पर्वत बनता है उसको वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं. एट द टाइम ऑफ volcanic eruption, the material which is thrown out is
deposited in the shape of cone. It is called volcanic mountain. अभी आपको मैंने बताया Fusiyama of Japan, Vesuvius of Italy, Cotopaxi of Ecuador, and Barren Andaman of India, Pavagadh and Girnar are the example of volcanic mountain. अब है residual mountain are formed from the residue which withstand against the natural force of erosion. Soft rocks are eroded and swept away since thousands of years, and the soil formed from solid rocks sustained as a highland. इट इज़ ओनली कॉल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स. बहुत सारी मिट्टी जो बहुत टाइम से जो है इधर उधर कहीं हिली नहीं है, बहुत वर्षों से इकट्ठी होती जाती है ना, उसको रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं. अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल एंड ईस्टर्न घाट आर द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन. इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन. माउंटेन सर्व द पर्पज ऑफ अ बॉर्डर लाइन and a wall of any country or a region and protect us from cold waves, help in bringing more rain by stopping moist winds. Mountains are place of origin of rivers. Fertile plains are constructed by the rivers flowing through the river flowing from the heavy rainfall regions, snow covered regions by the river flowing through them. River flowing from the heavy rainfall region, snow covered region work as a water storage which is necessary for generation of hydroelectricity. Apart from this, they are repository of forest resources, mineral resources and wildlife. Mountains are blessing for tourism industry, film, cinema industry and mountaineer. They are the habitat of the for the 10th part of world's population. Mexico and Bogota are the best example of it. देखो माउंटेन पर्वत से जो है हमें कितने सारे फ़ायदे होते हैं. एक तो वो हमें ठंडी हवाओं से, तेज़ तूफ़ानी आंधियों से हमें बचाते हैं, एक चीज़. दूसरा, हवाओं बादलों को रोक करके बारिश अच्छी करते हैं. उससे क्या होता है, खेती होती है, फसलें उगती है और हमें अनाज मिलता है. तीसरा, वो जो है माउंटेनियर्स के लिए अच्छा होता है, फिर टूरिस्ट के लिए अच्छा होता है. यानी कहने के लिए जो है माउंटेन्स बहुत अच्छी जगह हो जाती है. Plateau, land part having approximate height of more than 180 meters above the sea level. Wide and flat surface from the top is called plateau. अब प्लेट्यू क्या होता है कि वो पहाड़ी से थोड़ा नीचे होता है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू. प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड स्ट्रक्चर. इंटरमॉन्टेनिक प्लेट्यू, Pedunimont plateau or continental plateau. Intermountain plateau, any part of land which is fully or partially surrounded by the high mountain range from all 4 sides is known as intermountain plateau. Plateau of Tibet and plateau of Mongila are the example. Plateau Piedmont Plateau, region having a straight slope on the one side is the foot of mountain is called Piedmont Plateau. Patagonia, South America, Piedmont, US, Malwa Plateau in India are the best example of Piedmont Plateau. देखो 11.7 में पिडमॉन्ट प्लेट्यू दे रखा है. ये ऐसी आकृति का होता है. ठीक है. वी शेप का, फिर थोड़ा सा जाएगा, फिर वापस से वी शेप का. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, an elevated land part due to geological movement or cooling down of magma on a big high land creates continental plateau. Lavanic highland plateau of Maharashtra in India, plateau of Brazil, plateau of Arabistan, Spain, Greenland and Antarctica are the examples of continental plateau. Importance of plateau. The
Lavic soil of plateau is fertile and it is very favorable for cotton crop. Precious minerals like iron, manganese, and gold are found from the ancient solid rocks of the plateau. For example, Chota Nagpur plateau of India, sloughs of this plateau are very important for cattle rearing and also useful for tourism and film industry. जितने भी ये प्लेट्यूज आपने पढ़े ये जो है किससे बनते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है और जो मैग्मा होता है ना वो जब जम जाता है तो उससे ये प्लेट्यू बनता है। और ये प्लेट्यू जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब बारी आ रही है प्लेन्स की। प्लेन्स का मतलब बिल्कुल समतल भूभाग। Level land or flat land at the height of less than 180 meters above the sea level is known as plain. Most of plains in the world are formed by the alluvial soil deposit by the river. Apart from the river, some of the plains are also formed by wind, volcano, and glacier. Classification of plains. On the basis of construction, plains can be classified as coastal plains, structural plains, erosional plain, depositional plains. Coastal plains. Such plains are mainly formed near the seashore when the end of the continental part of land near seashore is uplifted due to the geological movement. These plains are formed. Such plains are known as structural plains. These type of plains are often found in the coastal region. कोस्टल रीजन मतलब कि जो समुद्र के किनारे की जो जगह होती है ना, जो प्लेन होती है उसको बोला जाता है। Plains is situated in the southeastern part of United States of America, spread up to the Gulf of Mexico. It is an example of coastal plain. Erosion which occur in the bottom of the land creates such plains. Plains in the center of Australia is formed in the same manner. Erosional plain. Process of erosion goes on continuously on the surface of the earth over the long run of time. Such plains are formed due to the erosion. erosion यानी जो मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है, जहाँ पे मिट्टी जो है कट जाती है और एक जगह इकट्ठी होकर जम जाती है, which occurs in the mountain and plateaus because of natural factors like river, wind, and glacier. This type of plains are not completely flat, but they are seen between hills of solid rocks. Plains of Canada and western Siberia are formed because of erosion. Plains built by erosion are also called peneplain. Depositional plain. This type of plain is formed because of alluvium deposit by river, glacier, winds, etc. in lakes or sea. Such plains are called depositional plain and also called riverine plain. River plains of Ganga Yamuna in India, Wen Ho plain in North China, Lombardy plain formed by Po River in Italy are the unique example of alluvial plains. When plains are formed with the deposition of alluvial in the lake, then they are called lake field. Kashmiri Valley is an example of lake field in India. Importance of plains. Places of human habitation and trade, commerce are established in the fertile plains. Flat plains have proved more useful for road route and rail routes. Cities having dense population are situated in the plains. Fertile land is more useful for farm production. Farm produce supplies raw material for the industries. देखो प्लेन लैंड का बहुत काम आता है, हम उसमें इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, रोड के लिए काम आ सकता है, रेल रनवे के लिए काम आ सकता है, प्लस खेती के लिए काम आ सकता है। यानी कि जो प्लेन्स होते हैं ना, प्लेन लैंड होती है, वो बहुत ज़्यादा हमें काम लग सकता है। अब यहाँ पर देखो अलग अलग दे रखा है। बे है, यानी बे का मतलब घाटी, गल्फ का मतलब जो खाई होती है ना,
दो पहाड़ियों के बीच का जो जगह होती है वो। कैप, कैप का मतलब कि जहाँ पर जो है वो वाटर बॉडीज जो है वो जमीन और पानी के बीच की जो जगह होती है, सी लाइंस, आइलैंड, जो कि महाद्वीप है ना, जो पानी समुद्र से घिरा होता है। वैली मतलब घाटियाँ। स्ट्रेट यानी कि जो दो जो पानी वाली जो जगह होती है उसके बीच में जो जगह होती है, यानी पतली सी जो जगह निकल रही होती है। फिर इतुस्मस यानी कि बहुत सकरी जगह जहाँ से निकलना भी मुश्किल हो। और फिर उसके बाद पेनिसुलर, पेनिसुलर का मतलब होता है जो पूरा का पूरा जो है तीनों तरफ से ऐसा ज़मीनी इलाका जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, उसको बोला जाता है पेनिसुलर। इसकी डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब किसी को भी चैप्टर में कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ बाय।